So very good evening, all the participants. Let us try to understand this part 4 of IBC through charts. I have already shared this PPT in the group also. So this is a comparison. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. So just a minute. So this is a cross comparison. And I think this is the best way to read the provisions because most of the provisions are similar in nature, right? So we will be reading provisions relating to insolvency professionals who are individuals. We shall be reading provisions relating to insolvency professional agencies, which are the monitoring agencies for IPs, just like a college. We'll be discussing provisions relating to IPE also, insolvency professional entities, which could be a registered partnership firm or an LLP or a company. And we'll be discussing the provisions relating to information utilities also. So, basic identity and governing framework. So, what they are? These are the sections and these are the regulations which govern it. So, this is the slide. So, what it says, let us try to understand it. It says nature and who is it? So, an IP, who is an IP? He is an individual who is enrolled with an insolvency professional agency and registered with IPPI to act as IRP, RP, liquidator, bankruptcy trustee, administrator, and so on. And authorized representative, facilitator. So these are the various roles which an IP may assume. Right? Side by side, we can read provisions relating to IPE, insolvency professional entity. It could be a company. It could be registered partnership firm or LLP. But majority of whose directors or partners, they have to be IPs, insolvency professionals. So it provides platform for IPs to practice together. Earlier, there was a concept of recognition only of IPEs, but now there is a mandate for registration of IPEs as well. Third in line is IPA, Insolvency Professional Agency. It is a body corporate registered with IBBI and whose sole purpose is to promote, regulate and develop the profession of IPs. To understand it in a layman's language, this insolvency professional agency is just like a college and IBBI is like a university. So if you want to study a subject, you have to take admission in a college. They will give you an enrollment number. Similarly here, you will register yourself, you will enroll yourself with IPA, who will give you an enrollment number, and the ultimate is the IBBI. So with IBBI you obtain a registration. Similarly here, both the IPA as well as IBBI can regulate IP or IPEs or IUs, right? So IUs are independently being regulated by IBBI, but IPAs can regulate both IP and IPEs, right? And IU is a person, it's a company registered with IBBI to collect, collate, authenticate and disseminate financial information. It is similar to the concept of MCA or SARSAI, which registers the charge. On satisfaction of charge also, you have to inform them and things like that, right? So this is the basic. Now governing sections are there for each of them and they are all under part 4. The primary role of an IP is to conduct insolvency proceedings because there has to be no conflict of interest. So this IP is an independent professional who is regulated by IBBI and who conducts or oversees the insolvency proceedings. He may assume different roles like IRP, RP, liquidator, bankruptcy trustee, right? And RP for PG, administrator, authorized representative, facilitator, and things like that. So these are the different roles.
What IPAs do, Insolvency Professional Agency, they enroll IPs as members and they regulate their conduct. They set and enforce the bylaws, provide authorization for assignment, which is similar to certificate of practice. These IPs, they provide an entity platform for IPs to operate jointly. So IP can only render services if he is a partner or director of IPE, if he is not an Indian citizen. So if somebody is not an Indian citizen, if somebody is not a citizen of India and still wants to practice the profession of insolvency, he has to be a partner or director of an IPE, right? So if you are not a citizen of India, you cannot enroll yourself directly as an IP, but you have to be a partner or director in an IPE, right? The role of information utility is to सर एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, इसका हाँ वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में कर सकते हैं आईपी? नहीं नहीं, वो तो वहां पर भी वही रूल है, बट हमें हमारे को तो आईबीसी से मतलब है। ओके हमें तो आईबीसी से मतलब है ना। वहां के रेगुलेशंस फिर वहां पर देखने पड़ेंगे हमारे को, ओके ओके, ठीक है सर। है ना। हाँ। और आईयू में क्या है, दे प्रोवाइड द कोर सर्विसेज, acceptance of electronic submission of financial information. They record, authenticate, and provide access to financial information. Now, who can apply or the eligibility base? If you want to enroll yourself as an IP or you want to register yourself with IBBI, you have to be an individual. You have to be a citizen of India. You have to pass the limited insolvency examination, right? For an IPA, it has to be a company registered under Section 8 of the Companies Act, and its sole purpose should be to carry out the functions of IPA, right? IPE, it has to be a company, registered partnership firm or LLP, and majority of directors or partners or shareholders have to be IPs. Information utility, it has to be a public company and its sole purpose should be to provide support services under IU regulations. Now let us see the provisions regarding registration and eligibility. There are certain requirements as to minimum net worth also. Minimum net worth is required for an IPA is 10 crores and minimum paid up capital is 5 crores. For an IPE, minimum net worth should be 1 crore and it has to be a company registered partnership firm or LLP. And in case of IU, minimum net worth requirement is 50 crores. Sometimes they ask questions on this. Minimum paid up capital for an IPA is 5 crores. And for IU, there is no specific threshold, but 50 crore net worth is the threshold. Maximum shareholding in case of an IPA. So, an individual cannot hold more than 5%. It has to be either 5% or less than 5% of paid up capital or voting power of IPA by any one person, right? In case of an IPE, majority of equity shares and voting rights will be held by IPs who are directors or partners. In case of information utility, you cannot hold more than 10% of the paid up equity capital or voting powers of the IPO. But exceptions are there for government, banks, stock exchanges, etc. Exceptions, these are also important. For an IPA, up to 15% of the paid up capital or voting power can be held by stock exchange, depository, banks, insurance companies, public financial institutions, and multilateral financial institutions. And up to 100% of paid up capital can be held by central government or state government or statutory regulator. Similarly, in case of information utility, up to 25% of the paid up capital can be held by a government company, stock exchange, depository, bank, insurance company, public financial institution. So you will notice there is a small difference, right? And up to 100% can be held by central government or state government or statutory regulator. And listed in an Indian company, so no individual can hold more than 10%. But 100% can be held
for initially 3 years. But these provisions are no longer applicable because it started in 2016. Now, what is the parameter? Control by persons. So, there are stipulations regarding control also. So, if there are persons who are resident outside India, how much they can control? In case of an IPA, it should not be under the control of person resident outside India, and not more than 49% of share capital can be held directly or indirectly by persons resident outside India. Similarly, in case of IU also, it should also not be under the control of person resident outside India, and not more than 49% of share capital or voting power can be held by persons resident outside India. Holding structure cap, it should not be a subsidiary. In case of an IPA, it should not be a subsidiary of a corporate body through more than one layer. There is condition regarding fit and proper criteria also. So in case of an IP, it applies to the IP himself as an individual. So there should be integrity. He should be a person of integrity. There should be absence of conviction, competence, and financial solvency. So financial solvency is judged by CIBIL score normally. In case of an IPA, the fit and proper criteria applies to the applicant, promoters, directors, and shareholders of IPA. So it includes integrity, reputation, character, absence of conviction and restraint order, competence, financial solvency, and debt. In case of an IPE, this fit and proper criteria applies to the IP directors or partners individually, right? And in case of IU, it applies to applicant, promoters, directors, or shareholders of IU, including persons who are holding more than 5% of share capital. Now, in case there is a change in the shareholding, because change in shareholding is described in case of IPA and IU. So it says whether the prior approval of the board is needed for change in shareholding. So it says in case of an IPA, if any person other than statutory body seeks to hold more than 10% of the share capital directly or indirectly, then prior approval of the board is needed. Similarly, in case of IU, board's approval is needed when any person seeks to hold more than 5% of share capital. Similarly, this prior approval of board is needed when there is a change in control, mergers and amalgamations, sale of major undertaking, voluntary liquidation or discontinuance of business. So in all these cases, prior approval of board is needed. Regarding nationality or citizenship, in case of an IP, he must be a citizen of India and he cannot render services unless he is a partner or director of an IP if he is not a citizen of India. In case of an IPA, more than 50% of the directors must be resident in India. In case of IU, it should not be under the control of persons resident outside India, right? So the non-resident shareholding cannot exceed 49%. Now regarding the forms. Application form, Form A for IP, Form A for IPA, Form C for IPE, and Form A for IU. But they are under different regulations, right? Like for IP, it is under IP regulations. For IPA, it is under IPA regulations. A registration or application fees, sometimes they ask questions on this. So it is 20,000 in case of an IP and it is payable with Form A. In case of an IPA, it is 10 lakhs for registration and rupees 5 lakhs for renewal. In case of an IPE, it is 50,000 rupees, and in case of IU, it is 10 lakh rupees on registration as well as renewal. But please note that this registration or application fees is non-refundable. So it is in the nature of a processing fees, processing of application, you can say, right? Certificate shall be granted in Form B in case of IP, IPA and IU, and in case of an IPE, it shall be granted in Form D. Validity of certificate, it is normally 5 years. 5 years from the date of issue. Similarly, in case of an IPA, it is 5 years from the date of issue, and renewal fees within 15 days of the commencement of the financial year. Right?
In case of an IPE, it is not prescribed as a fixed term. So it's ongoing subject to compliance. And in case of IU, it is 5 years from the date of issue. Okay. And renewal fees is 1 crore within 15 days of issue. Now board's time to grant certificate. It is within 60 days of the receipt of application. Grant of in principle approval. So in certain cases, you can apply for an in principle approval also. Like in case of an IPA, board may grant in principle approval. For that, you have to pay a fees of 10 lakh rupees, and this in principle approval is valid for a period of 1 year, right? In case of an IU also, board may grant in principle approval. The registration fees is 10 lakhs. It is valid also for 1 year. Now renewal, when to apply? In case of an IP, you have to apply before the expiry of the certificate. In case of an IPA, you have to apply 6 months before the expiry of registration. And in case of an IU, it has to be 6 months before the expiry of registration. Now regarding annual fees and recurring financial obligations. So annually, an insolvency professional has to pay 1% of the professional fees earned in the preceding financial year. The word used is earned, right? In case of an IPA has to pay an annual fees of 10% of the turnover, in addition to registration fees of rupees 10 lakhs. In case of an IPE, it is 1% of the turnover from services rendered in preceding financial year. And in case of an IU, it is 10% of the turnover from services in preceding financial year. I have given the relevant regulation number also. You can cross check with it. Annual fees form is Form E in case of an IP. In case of an IPE, it is Form G, Annual Statement of Turnover. And in case of an IU, there is no specific form. Annual fees, due date, in case of an IP, it has to be paid on or before 30th April. Otherwise, simple interest at the rate of 12% per annum shall be charged. In case of an IPA, it is within 15 days of the commencement of the financial year. In case of an IPE, it is on or before 30th April. And in case of an IU also, it is on or before 30th April of the each year. Then simple interest at the rate of 12% per annum on the amount unpaid, right? Compliance certificate. In case of an IPE, it has to submit a Form H also. So compliance certificate, it has to be submitted to the board by 15th October for each year for preceding financial year, right? And in case of an IU, annual audited accounts are to be submitted to the board. Now, if there is a change, then every change has to be notified to the board also. In case of an IPE, it is rupees 2000 per notification in Form F when director or partner ceases or joins an IPE. So you have to notify the board within a period of 7 days with fees of 2000 per notification. In case of an IU, if there is a change, then board has to be intimated within 15 days if any person holding more than 5% of the share capital or voting power ceases to hold such interest. Record maintenance, it is minimum 3 years. Now regarding governance and board structure. Governance, board composition and independent directors. So what is the governing board? In case of an individual, naturally there is no concept of governing board, but you are subject to code of conduct under IP regulations. In case of an IPA, the governing board has to be as per the bylaws. And the IBPI has framed certain model bylaws also. So the bylaws have to be in consonance with the model bylaws. More than 50% of the directors should be independent directors. Minimum one independent director is required to conduct meeting. Independent directors shall be chairperson of the board and 50%
of the directors shall be, just a bit, ये कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर गवर्निंग, हाँ हाँ। हम्म। तो मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर शैल बी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है। इन केस ऑफ एन आईपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, majority must be IPs and there is no prescribed independent director structure. Similarly, in case of an IU, the governing these bylaws, they have to be consistent with the model bylaws which are framed by the board. More than 50% of the directors shall be independent directors. Minimum one independent director is required to conduct the meeting, and independent directors shall be persons resident in India. Chairperson requirement. In case of an IPA, independent director shall be chairperson. Similarly, in case of IU also. There is a capping on these directors also. Like in case of an IPA, not more than 1/4 of the directors of IPA shall be IPs. ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आईपीए में जनरली अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो हमें लगेगा ज्यादा आईपी होने चाहिए, लेकिन आईपीए रेगुलेशंस क्या बोलते हैं कि नॉट मोर देन 1/4 ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईपीए शैल बी आईपीएस। ठीक है, वो एक ओवरऑल व्यू चाहते हैं। इन केस ऑफ एन आईपीई, majority of the directors must be IPs, at least more than 50%. ठीक है। Persons resident in India, an IP has to be a person resident in India. In case of an IPA, more than 50% of the directors shall be persons resident in India. ठीक। Full time member requirement for disciplinary orders. In case of an IPA, क्या कहता है, ऑर्डर कैन बी पास्ड बाई एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अनलाइक आईपीई, full time director is not required. But in case of an IPE, only whole time member of the board can pass disciplinary order. And in case of an IU also, only whole time member of the board can pass disciplinary orders. Now regarding this fit and proper criteria, it applies to the applicant, promoters, directors and shareholders of IPA. In case of an IPE, fit and proper criteria applies to the IP directors or partners themselves by virtue of IP registration. And in case of an IU, this fit and proper criteria applies to the applicant, promoters, directors and shareholders of IU, including persons holding more than 5% of share. Now bylaws amendment and AFA. In case of an IPA has to have bylaws, but they must have bylaws consistent with the model bylaws prescribed by IBP. Okay. And in case of an IU also, the bylaws, there must be bylaws and they must be consistent with the board bylaws. Amendment of bylaws, बिल्कुल सेम प्रोविजन है आईपीए और आईयू। क्या कहता है कि 75% अप्रूवल चाहिए ऑफ गवर्निंग बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज 3/4 majority, 3 times vote in favor as in against। ठीक है, और इस केस में भी 75% ऑफ द अप्रूवल ऑफ द गवर्निंग बॉडी। अमेंडमेंट कब तक फाइल करनी है? रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद आईबीबीआई विद इन 7 days ऑफ अप्रूवल, बोथ इन केस ऑफ आईपीए एंड आईयू, दोनों का सेम है बिल्कुल अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। एंड व्हाट शैल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट? In case of an IPA and IU, it shall be 7th day of the receipt by the IPPI. ठीक है। Amended bylaws have to be filed in printed form within 15 days from the effective date. Now regarding authorization for assignment. So IPA issues a reduced AFA and IPA must inform the board within 1 working day of issuing renewal, suspension or cancellation of AFA। ठीक है। आईपीए क्या होना है? आईपीए तो इशू ही करती है, तो आईपीए इश्यूज, रिन्यूज, सस्पेंड्स और कैंसल्स द एएफए एंड दे मस्ट इन्फॉर्म द बोर्ड विद इन 1 working day ऑफ ईच एक्शन। ठीक है।
Regarding in case of IPE, IPE is partner or director, they must hold the AFA. Otherwise, IPE cannot take assignments. बेसिकली क्या होता है, असाइनमेंट तो आपको इंडिविजुअल नेम से ही मिलेगा, है ना. नाउ सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन. It is not specifically prescribed in case of an IP, so there could be suspension or cancellation by board on the disciplinary orders. In case of an IPA, surrender of registration can take place. So you have to inform the board basically. Okay? So board publishes notice on website within 7 days of receiving the request. Objections are invited within 14 days and board approves within 30 days of the receipt of objections, and board publishes that IPA registration stands surrendered. Okay. In case of an IPE, it is not specifically prescribed. So cessation by directors or partners is notified in Form F within 7 days. Now surrender of registration in case of an IU. So IU may seek the board approval in case of persons holding more than 5% of the share capital of change. There should be change in control, etc. etc. तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली वॉलेंटरी लिक्विडेशन होगा या डिसकंटिन्यूएंस होगा केस ऑफ एन आयु. Now regarding show cause notice. Disciplinary proceedings and show cause notice. Show cause notice, what is the mode of service? So the show cause notice must be served at IP's address provided by him or the IPA by registered post with acknowledgement or through electronic means, email at address provided by IPA to the board. Okay. In case of an IPA, it has to be at IPA's registered office by registered post with acknowledgement or electronic means, email at address provided by IPA to the. ठीक है. और आयु के केस में जो आयु का रजिस्टर्ड ऑफिस है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. Disciplinary committee regarding disposal of notice, it has to be within 6 months of the receipt of the show cause notice in all the cases. The order of the disciplinary committee, what is the effective date? In case of an IP, the disciplinary order passed shall not be effective until 30 days have elapsed from the date of issue of order by the disciplinary committee. ठीक है, सभी केसेस में वही. Now who can pass the disciplinary order? Any member of the board. So full-time director is not required for IPs. ठीक है. In case of an IPA also, any member of the board, full-time director is not required. लेकिन IPE के केस में क्या है? Only whole-time member of the board. And in case of an IU also, only whole-time member of the board can pass this disciplinary order. Appeal against the order. IP can appeal to NCLT. ये क्या हो रहा है बार बार? ये एसक्यू में बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चक्कर है? वो लगता है उनका कुछ नेट का इशू हो सकता है. चलिए. So appeal against the order. IP can appeal to NCLT within 30 days of the receipt of the order. ठीक है. And case of an IPA, IPA can appeal to NCLT. सभी केस में NCLT को ही अपील है within 30 days of the receipt of the order. Now rejection of application. Rejection of application ये है कि if you apply for registration and the board wants to reject your application, then board has to communicate the rejection within 45 days of receipt of the application. IP has to respond within 15 days and board shall take the final decision within 30 days of the receipt of explanation. ठीक है, ये सभी केसेस में सेम है. The board shall communicate rejection within 45 days of receipt. IPA has to respond within 15 days and board shall take the final decision within 30 days of the receipt of explanation.
सिमिलरली इन केस ऑफ आयु ऑल्सो सेम है। ठीक है, तो सबको इकट्ठा पढ़ने से क्या होता है, कुछ चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। एंड रिगार्डिंग ऑर्डर पब्लिकेशन, इट हैज टू बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, सभी केसेस में वही, इट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ये भी होंगे। उसके बाद में की ऑब्लिगेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रायर अप्रूवल, सिटीजनशिप, कोर सर्विसेज क्या है देखते हैं। नाउ की ऑब्लिगेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। Code of conduct. An insolvency professional, he has to abide by the code of conduct plus the first schedule of IP regulations. He has to disclose the pecuniary or personal relationship with stakeholders. ठीक है। IPA has to ensure that its enrolled members they abide by the code of conduct and govern and regulate members through bylaws. In case of an IPE, partners or directors must each abide by the code of conduct as individual IPs. In case of an IU, it must provide core services as defined in section 3 subsection 8, accepting submissions, recording, authenticating, providing access to financial information. Regarding citizenship or residency, in case of an IP, it must be a citizen of India and it cannot render services unless it is a partner director of IP if not a citizen of India. IPA की केस में क्या है, मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, आईपीई के केस में कोई ऐसा सिटीजनशिप वाला रिक्वायरमेंट तो है नहीं, है ना, बट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स दे मस्ट बी आईपीएस हु इंडिविजुअली मस्ट बी इंडियन सिटीजन्स। In case of an IU should not be under the control of persons resident outside India, and uh, the shareholding by residents cannot exceed 49%. ठीक है। Prior approval of the board is needed in case of an IPA when any person other than statutory body seeks to hold more than 10% of the share capital directly or indirectly. ठीक है। Similarly, in case of an IU, board approval is needed when any person seeks to hold more than 5% of share capital and for change in control, merger and acquisitions, voluntary liquidation, sale of major undertakings. IPA membership requirement for IPs. It must be enrolled as member of an IPA. It should be registered with the board, the IBBI separately, and limited insolvency examination clearance within 12 months of the date of application. In case of an IPA, it must grant membership to eligible IPs and should provide authorization for assignment, and it has to regulate members through bylaws, which have to be consistent with the model bylaws. In case of an IPE, IP must be partner or director of IPE to practice as IPE. IPE cannot take assignments unless each IP partner or director holds valid authorization for assignment. In case of an IU, it doesn't deal in insolvency procedures. Pecuniary relationship restrictions. In case of an IP, it must disclose any pecuniary or personal relationship with any stakeholder. It cannot act if there is a conflict of interest. In case of an IPA, the independent directors of IPA must not have a pecuniary relationship with IPA and its directors or shareholders holding more than 10% of share capital for 2 preceding financial years or current financial year. ठीक है। In case of an IPE, partners or directors individually must disclose pecuniary relationships. In case of an IU, independent directors of IU must not have pecuniary relationship with IU. Its directors or shareholders holding more than 10% of share capital for 2 preceding financial years or current financial year. ये restrictions. Whether it can render insolvency services, an IP can render services acting as IRP, RP, liquidator, bankruptcy trustee, RP, administrator, authorized representative, facilitator, etc. सही। कुछ कुछ आपको रेपिटेशन भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ये एक पूरा चार्ट है इसमें, ये आप देख लीजिएगा। चार्ट तो अपने आप देख सकते हैं, इसमें वो खास बात है नहीं, है ना। ये वही है, हमने पहले भी इसको कर लिया। उसके बाद में की डिस्टिंक्शंस टू रिमेम्बर, क्या ध्यान में रखना। जैसे डिसिप्लिनरी ऑर्डर है, ठीक है, तो इसमें होल टाइम मेंबर है किसके लिए, आईपीई और आईयू के लिए। फॉर आईपी एंड आईपीए एनी बोर्ड मेंबर कैन पास ए डिसिप्लिनरी ऑर्डर, बट फॉर आईपीई एंड आईयू only a whole time member of the board can pass the order. So this is a crucial distinction of tested in exams. ठीक है। काजल किरण जी, आप एक बार चेक कर लेना पूरा पीपीटी, कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो इसमें। काजल किरण जी, आर यू देयर? कोई बात। एएफए, ओनली आईपी एंड आईपीई नीडेड, ठीक है। और आईपीए इश्यूज, ये क्या होता है, आईएएफए ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट, सिमिलर टू सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एन आईपी मस्ट होल्ड ए वैलिड ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट issued by IPA to take new assignments after 31st December 2019. And IPA's partners or directors must each hold AFA. IPA issues, renews, suspends or AFA, and it must inform IBBI within 1 working day of each action. ठीक है। शेयर होल्डिंग थ्रेशोल्ड 5% है आईपीए के लिए और 10% है फॉर आई। सो नो वन कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ आईपीए। द इक्विवेलेंट थ्रेशोल्ड फॉर आईयू इज 10%। एक्सेप्शंस क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू होल्ड अप टू 15% और 25% इन केस ऑफ आई। ठीक है। बायलॉज, बायलॉज किसमें, आईपीए और आईयूज में ही होते हैं, और 75% अमेंडमेंट थ्रेशोल्ड। सो ओनली आईपीए एंड आईयूज आर रिक्वायर्ड टू हैव बायलॉज consistent with the board prescribed model bylaws, and amendment requires 75% of the governing board approval. ठीक है, 3 times vote in favor as against, and IP and IPEs do not have separate bylaws. Independent director must be chairperson in case of an IPA and IU. So both IPA and IU require that chairperson of the governing board must be an independent director. So no equivalent requirement for IPA or IPA. IPE की नेटवर्थ 1 करोड़, IPA नेटवर्थ है 10 करोड़ और IU में है 50 करोड़। ठीक है। IPE has the lowest bar 1 crore. IPA needs 10 crores net worth plus 5 crore paid up capital, और IU has the highest threshold at 50 crore net worth. ठीक है, reflecting its critical information infrastructure role. Registration fees, IP and IPE registration are relatively modest, 20,000 or 50,000. IPA and IU both charge 10 lakhs. ठीक है, reflecting their regulatory and infrastructure roles. IU renewal fees is 1 crore payable within 15 days of the issue of certificate. फिर एनुअल फीस कितनी देनी है, आईपी और आईपीई के केस में 1% ऑफ फीस है। ठीक है, और टर्नओवर एंड केस ऑफ एन आईपीए एंड आईयू इट इज 10% ऑफ द टर्न। ठीक है, सो आईपी एंड आईपी पेज 1% ऑफ द प्रोफेशनल फीस और टर्नओवर एनुअली टू द बोर्ड, एंड आईपी एंड आईयू पेज 10% ऑफ द टर्नओवर, सिग्निफिकेंटली हायर कंट्रीब्यूशन रेट रिफ्लेक्टिंग देयर लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बड़ी जल्दी से पूरे का पूरा हमने कवर कर लिया। मोटा मोटा बातें इसमें काफी सारी कवर हो गई है। ठीक है, सवाल वो पूछते हैं नॉर्मली फीस के ऊपर सवाल पूछते हैं, या नेटवर्थ के ऊपर सवाल पूछते हैं, या शेयर होल्डिंग के ऊपर सवाल पूछते हैं नॉर्मली। ये तीनों चीजें तो इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हम एक बार रेगुलेशंस को भी देख लेते हैं। अब बोर्ड से रिलेटेड एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, वो जरूरी है। ये
अब एक बार बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस और देख लेते हैं। हम्म, 529। ऐसा एक चार्ट ना बोर्ड का भी बना दूंगा, तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आ गया 188। ठीक है, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल, इज इट विजिबल? Yes, visible. ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें, और इसके साथ आपको पढ़ना क्या है? आईबीबीआई के साथ में आपको पढ़ना है प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स एंड एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, सेक्शन 188, एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड एस्टेब्लिश किया है, और 188(1) कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय notification of point, there shall be established for the purpose of this code a board by the name of the Insolvency and Bankruptcy Board of India। 10 साल होगा इसको बने हुए। The board shall be a body corporate by the name of aforesaid having perpetual succession and a common seal। ठीक है, and a with power subject to the provisions of this code to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, and to contract and shall by the said names who are being। हेड ऑफिस होगा इन एनसीआर। ठीक है, द बोर्ड में एस्टैब्लिश ऑफिसेज एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अंदर कौन कौन होंगे? एक तो होगा चेयरपर्सन, फिर 3 मेंबर्स होंगे फ्रॉम अमंग्स द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, वन ईच टू रिप्रेजेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। और ये तीनों मेंबर एक्स ऑफिशियो। ठीक, 1 member to be nominated by RBI ex officio, then 5 other members to be nominated by the central government, of whom at least 3 shall be the whole time members। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर है इसमें? एक तो चेयरपर्सन हो गया, फिर 3 है जो एक्स ऑफिशियो है, ये कहां से आ रहे हैं और इसका रैंक क्या है? ज्वाइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, तो सीएफएल याद कर सकते हैं, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एफ से एफ हो गया, एक सी से हो गया आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स, और एल से हो गया लॉ। तो सी एफ एल याद कर लेना, इस पे सी एफ एल लिख देना इसके आगे, तो आपको ध्यान में रहेगा ये। ठीक, तरीके हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हैं जो भी याद करने का। कई बार पूछ लेता है वो, है ना? 5 other members to be nominated by the central government, of whom at least 3 shall be the whole time। The chairperson and other members shall be persons of ability, integrity, and standing who have shown capacity in dealing with problems relating to insolvency or bankruptcy and have special knowledge and experience in the field of law, finance, economics, accountancy, or administration। ठीक है, the appointment of the chairperson and members of the board, other than the appointment of an ex officio member under this section, shall be made after obtaining the recommendation of a selection committee कंसिस्टिंग ऑफ, एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा उसमें जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा? वो चेयरपर्सन होगा। देन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंबर होगा इसमें, एंड चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो चेयरपर्सन भी इसमें मेंबर होगा, एंड 3 एक्सपर्ट्स ऑफ रिप्यूट फ्रॉम द फील्ड ऑफ फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शैल बी मेंबर्स। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो कि इनको सेलेक्ट करेगी। ठीक है, और चेयरमैन का सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो शैल बी 5 years और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment। ठीक है, फिर इसके लिए सैलरी के लिए रेगुलेशंस, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस of the chairperson and members
अदर देन द एक्स ऑफिशियल मेंबर शैल बी सच एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब के लिए आपको सैलरी रेगुलेशंस देखने हैं। तो सैलरी रेगुलेशंस एक बार देख लेते हैं, क्या कहते हैं सैलरी रेगुलेशंस। कई बार सैलरी पे सवाल पूछ लेते हैं। ये है सैलरी रेगुलेशंस, ठीक है। तो सैलरी रेगुलेशन में जो चेयरपर्सन है उसकी पे है 5,62,000 पर मंथ, ठीक है। और होल टाइम मेंबर की पे है 5 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। और बाकी पीएफ वगैरह तो मिलता ही है। डीएनएस अलाउंस मिलेगा जो भी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को पे मिले। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा 6,000 पर मंथ। ये हो गया। और चाहिए ध्यान में रखना है, ठीक है। जो फीस एंड अलाउंस ऑफ पार्ट टाइम मेंबर है, ए पार्ट टाइम मेंबर शैल बी एंटाइल्ड टू रिसीव रिमंडेशन बाय वे ऑफ ए फीस ऑफ 6,000 फॉर ईच मीटिंग। अब दोबारा हम वहीं पर चलते हैं अपने रेगुलेशंस पर। तो कम से कम ये 5,62,500 और 5 लाख तो याद रखना ही है आपको। मिनिमम इतना तो ध्यान में होना ही चाहिए। दो फिगर तो जरूर याद रखिएगा, 5,62,500 और 5 लाख। फुल टाइम मेंबर के लिए 5 लाख है, और जो चेयरपर्सन है 5,62,500। ये हो गया, यहाँ पर थे हम। अब सेक्शन 190, सेक्शन 190 क्या बोलता है? ये रिमूवल ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑफिस। ये जो मेंबर है इनका रिमूवल कैसे हो सकता है, ये उसकी बात करता है। तो ये कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव ए मेंबर फ्रॉम ऑफिस इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, if he has become physically or mentally incapable of acting as a member, if he has been convicted of an offense which in the opinion of the central government involves moral turpitude, if he has so abused his position as to render his continuation of office detrimental to public interest, provided that no member shall be removed under clause D unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter, ठीक है। तो डी के केस जो अब्यूज ऑफ पोजिशन, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। बाकी में तो बाकी तो फैक्ट्स हैं, है ना। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, फिजिकल मेंटल इनकैपेबल या कन्विक्शन, है ना। तो उस केस में तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना जरूरी नहीं है। बट ये जो लास्ट वाला है उस केस में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना जरूरी, ठीक है। 191 पावर्स ऑफ द चेयरपर्सन। सेव एज अदरवाइज डिटरमिन्ड by regulations, the chairperson shall have powers of general superintendence and direction of the affairs of the board and may also exercise such other powers as may be delegated to him by the, ठीक है। तो जनरल पावर्स हैं सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है। 192 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में भी आपको रेगुलेशंस देखने हैं। कौन से रेगुलेशंस हैं? गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस, ठीक है। द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम्स। तो एक तो सैलरीज और अलाउंसेस वाले रेगुलेशंस आपको देखने हैं, और फिर ये गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस। The board shall meet at such times and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings, including quorum at such meetings, as may be determined by regulations. The chairperson, or if for any reason the chairperson is unable to attend any meetings of the board, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting. ठीक है। All questions which come up before any meeting of the board shall be decided by a majority votes of the members present and voting. And in the event of inequality of votes, the chairperson or in his absence, the person
प्रिजाइडिंग शैल हैव ए सेकंड और कास्टिंग। ठीक है, तो एक बार ये गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस भी देख लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ये है जी आपके प्रोसीजर फॉर गवर्निंग बोर्ड मीटिंग्स। कि मीटिंग्स में क्या क्या होगा ये सब बातें करते हैं। Governing board business. The governing board shall transact the following business: regulations to be made, annual accounts and audit, annual budget, annual report, delegation of powers and operation manuals for various activities. ठीक है, चलिए। कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग कितनी कितनी होनी है? There shall be at least 4 meetings of the governing board in a year and at least 1 meeting in each quarter. ठीक है, कौन चेयर करेगा? चेयरपर्सन, और इन एब्सेंस एनी अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन। ठीक है, कौन कौन रिक्वेस्ट कर सकता है मीटिंग्स को? एनी 3 members may require the chairperson to convene a meeting of the governing board at any time, and the chairperson shall convene the meetings of the governing board provided accordingly, provided that if the chairperson is not available, any 3 members may require the secretary to convene the meetings of the governing board. ठीक है, कहां पर होगी मीटिंग? सच टाइम एंड प्लेसेस एज में बी स्पेसिफाइड। मीटिंग्स ऑर्डिनरी होंगी हेड ऑफिस में। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्निंग बोर्ड में ऑल्सो होल्ड मीटिंग्स एट अदर ऑफिसेस और एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया wherever in the opinion of the governing board it is expedient to do so. ठीक है, नॉर्मली चेयरपर्सन प्रेजाइड करेगा, अगर वो नहीं है तो फिर एनी अदर मेंबर चोजन बाय द मेंबर्स में प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। नोटिस, नोटिस कितना है? Normally 10 days notice. Not less than 10 days notice shall ordinarily be given. अगर अर्जेंट मीटिंग है तो 10 days नोटिस में भी डिस्पेंस। ठीक है, नो बिजनेस अदर देन दैट फॉर विच द मीटिंग हैज बीन कन्वीन्ड शैल बी ट्रांजैक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। कोरम कितना होगा? 5 members इफ द गवर्निंग बोर्ड हैज 8 और मोर मेंबर, और 3 members होगा इफ द गवर्निंग बोर्ड हैज लेस देन 8 members। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। सेक्रेटरी, द चेयरपर्सन शैल नॉमिनेट ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, मतलब ये एम्प्लॉय होता है सेक्रेटरी। ठीक है, द चेयरपर्सन शैल नॉमिनेट ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड एज सेक्रेटरी टू द गवर्निंग बोर्ड टू कीप कस्टडी ऑफ कॉमन सील, रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग्स। सेक्रेटरी शैल अरेंज मीटिंग्स वगैरह। मेंबर्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स इन सर्टेन केसेस, वो बेसिकली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दे शैल नॉट टेक पार्ट। Obligations of a member to give information of disqualification. A member shall, as soon as possible, inform the board if he becomes subject to any of the disqualifications specified in section 190 of the code, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, the board shall inform the central government if it comes to the notice of the board that any member has attracted any of the disqualifications. Declaration of fidelity, ये आपको देना है। manner and form in which contracts may be executed, रिलैक्सेशन, बस ये ओथ ऑफ सीक्रेसी ये खत्म हो गया। ठीक है, ये तो रेगुलेशन है। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स पे क्या सवाल पूछ लेता है? क्या कहता है कि होल टाइम मेंबर shall not accept any gift by whatever name called to the extent possible from a regulated entity. A whole time member shall hand over the gift if he receives any and the value exceeds rupees 5,000 to the IBP. ये भी हो गया। अब हम दोबारा अपने रेगुलेशंस पर चलते हैं जहां पर हम थे।
हम्म 190 हो गया हमारा। यहाँ पर थे हम लोग, है ना? 192 पर थे। ये मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वाला हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है। 193 क्या बोलता है? मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स इन सर्टेन केसेस, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और डिस्क्लोज कर देगा। 194 वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द, ठीक है। तो नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy in or any defect in the constitution of the board or any defect in the appointment of a person acting as a member of the board. The board may appoint such other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions in such manner as may be specified. तो इसके लिए क्या है? एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, ये रेगुलेशंस, ठीक है। एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू एम्प्लॉइज, उसके लिए एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस। तो आपको ये भी और पढ़ने हैं, एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस और एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें से एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस एक बार देख लेते हैं, एक दो बात इंपॉर्टेंट है उसमें जिसपे सवाल वो पूछता है। एक तो पूछता है गिफ्ट के ऊपर। ये क्या कहते हैं हमें? ये acceptance of gifts. An employee shall not solicit or accept any gift or permit any member of his family or any person acting in his behalf to accept any gift from any person with whom the employee is likely to have official dealings, either directly or indirectly, or from any subordinate employee. Trivial gifts like small packet of sweets, diaries, calendars on the occasion of Diwali and New Year, or a casual meal, lift, or other social hospitality may, however, be exempted. ठीक है। The expression gift shall include free transport, boarding, lodging, or other services, or any other pecuniary advantage, unless it is provided by a relative, near relative, or a personal friend, having no official dealings with the employee or with the board. ये जो 10,000 वाली लिमिट है इंपॉर्टेंट है। ऑन ओकेजन सच एज मैरिजेस, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, when the making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his personal friends, having no official dealings with the employee or with the board, but he shall report to the board within 30 days if the value of any of such gifts exceeds rupees 10,000. ठीक है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद में हम दोबारा पर चलते हैं। 530। यहाँ पर थे हम। वैकेंसीज वगैरह हो गया। देन पावर टू डेजिग्नेट फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। Until the board is established, the central government may by notification designate any financial sector regulator to exercise the powers and functions of the board. तो ऐसा तो हुआ नहीं, शुरू से ही बोर्ड बन गया था। ये हो गया। उसके बाद में है हमारा ये 195 तक तो हो गए, ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, और इसके साथ में आपको पढ़ने हैं एडवाइजरी कमिटी रेगुलेशंस। एक तो इन्होंने ना बड़ा इसको घुमा रखा है, अलग सेक्शन पढ़ो फिर रेगुलेशंस पढ़ो, भाई यहीं पर दे देते सारा कुछ ना। ये इन्होंने जानबूझ के किया है वैसे, क्योंकि ये कहते हैं नया लॉ है, तो नए लॉ में क्या है, हमें बार बार कोड में अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, हम रेगुलेशंस में अमेंडमेंट कर देंगे। भाई कोड में अमेंडमेंट तो आपको पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है,
लेकिन जो रेगुलेशंस में अमेंडमेंट है ये क्या होता है, ये बोर्ड कर देता है। ये फर्क है, इसीलिए इस लॉ को रेगुलेशंस के थ्रू चलाते हैं। 196 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, क्या कहते हैं, बोर्ड के ये काम है। ठीक है, दुनिया जान के काम दे रखे हैं इसमें, ये सारे काम है बोर्ड के। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और अदर कमिटीज। ठीक है, क्या कहता है, द बोर्ड में फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज of its functions may constitute advisory and executive committees or such other committees as it deems fit, consisting of a chairperson and such other members as may be specified by regulations। तो एक बार एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस। ये एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस है। ठीक है, कौन कौन सी कमेटी होंगी, पहली होगी एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स, फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, advisory committee on individual insolvency and any other subject specific advisory committee। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी में क्या होगा, प्रोफेशनल मेंबर्स होंगे हु आर एमिनेंट एकेडमिशियंस और प्रैक्टिशनर्स, जनरल मेंबर्स होंगे, दो तरह के मेंबर होंगे, प्रोवाइडेड दैट प्रोफेशनल मेंबर्स एंड जनरल मेंबर्स शैल रफली बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन एडवाइजरी कमेटी। टर्म ऑफ ए मेंबर शैल नॉट एक्सीड 3 years। The board shall designate one of the general members of the advisory committee as its chairperson and one of its senior officers or secretary to the advisory committee, and such secretary shall have right to speak but not vote on an issue। ये फीस के बारे में पूछ सकता है, मेंबर ऑफ द कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू सिटिंग फीस ऑफ 10,000 फॉर ए मीटिंग ऑफ द कमिटी। बस और कोई खास बात इसमें नहीं। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब हम दोबारा से चलते हैं अपना वहीं पर जहां पर हमने छोड़ा था, 536। मैं इसका भी एक चार्ट बना दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी, फिर उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इसमें भी, है ना। देखो, सैलरी एंड अलाउंसेस रेगुलेशंस हो गए, गवर्निंग बोर्ड मीटिंग रेगुलेशंस हो गए, एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स, एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस, एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशंस। तो सारे के सारे जो है ना, इसके लिए एक ही मैं बना दूंगा बोर्ड वाला भी। वो चारों तो हो ही गए, बोर्ड का रह गया था, बोर्ड का भी। ये हो गया 198 कंडोनेशन ऑफ डिले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड। भाई हमने क्या पढ़ा कि बोर्ड भी, आप बोर्ड को रिवर्ट करना है नॉर्मली विद इन 10 days, कई जगह 7 days में, है ना। तो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड वेयर द बोर्ड डज नॉट परफॉर्म एनी एक्ट विद द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर दिस कोड, द रिलेवेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंडोन द डिले। ठीक है, अगर बोर्ड की तरफ से कोई डिले होता है जो कि पीरियड स्पेसिफाइड है उसमें, ठीक है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रीजन रिकॉर्ड करेगी और कंडोन कर देगी डिले को। ये हो गया हमारा 198। एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन हमने देख ही लिए। बाकी तो जितना पढ़ते रहो उतना कम है। लेकिन हाँ, कुछ मिनिमम तो जरूर पढ़ना चाहिए। ये ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग। उसके बाद हम सेक्शन 199 पर आते हैं। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस, एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स। 199 एक बार सेक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर रेगुलेशंस जो है
अगली क्लास में हम कर लेंगे, और उसको हम कर लेंगे चार्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे आज चार्ट पढ़ा ना, इसी तरह चार्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे उसको। 199 क्या है? नो पर्सन टू फंक्शन एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तो बेसिकली हम कर भी चुके हैं। ये सारा रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी तो हमने पढ़ा ही है अभी, है ना। हम्म। अपील आपको करनी है किसको? एनसीएलएटी को। गवर्निंग बोर्ड, अब इसके भी गवर्निंग बोर्ड के रेगुलेशंस है, आईपीए के। फिर फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज टू मेक बायलॉज। ये बायलॉज हो गए, फिर आपके मॉडल बायलॉज हो गए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ये भी हमने कर लिया, चार्ट के थ्रू पढ़ लिया हमने। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशंस, ये सब हम कवर कर चुके हैं मोटा मोटा, सारे पॉइंट्स इसके हमने कवर कर लिए हैं। एक पॉइंट जो वो पूछता है, इसमें दो बातें हैं, ये लास्ट हम कवर कर लेते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या? एक तो ये डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ है। क्या कहता है कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, ये पॉइंट नंबर 8 है, एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप विद एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंटाइटल्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 53 or 178 of the code, and the concerned corporate person and debtor as soon as he becomes aware of it by making a declaration। तो इसको डिक्लेरेशन करना है, और डिक्लेरेशन करके ये जो है इसको डिस्क्लोज करनी है, ये रिलेशनशिप। क्या कहता है? एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज एज टू वेदर ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ or has been in the panel of any financial creditor of the corporate debtor to the committee of creditors and to the IPA of which he is a professional member, and the agency shall publish such disclosure on its website। देखिए, कुछ तो हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि यू कैन नॉट बिकम एन आरपी और आईआरपी। यहां पर क्या है? यू कैन बिकम, बट आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी सीआईआर पे चल रही है। ठीक है, उस सीडी का कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होगा? उसी में आएगा। और ये जो आईआरपी है या आरपी है, ये उसका एम्प्लॉय रह चुका है, मान लो, उस फाइनेंशियल क्रेडिटर का। ठीक है, ही वॉज है, क्योंकि अब तो एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये तो फुल टाइम काम है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के बाद तो आप एम्प्लॉयमेंट में रह नहीं सकते। लेकिन मान लो आप पहले से एम्प्लॉयमेंट में थे उसकी, मान लो एसबीआई एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और आप एसबीआई के ही एम्प्लॉय थे, अब आप बन गए आईआरपी या आरपी, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई मैं इस कंपनी का पहले एम्प्लॉय था। किसको डिस्क्लोज करना है? टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड द आईपीए ऑफ विच यू आर ए प्रोफेशनल मेंबर, एंड एजेंसी शैल पब्लिश सच डिस्क्लोजर ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, अब ये सभी के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल डिस्क्लोज इट्स रिलेशनशिप इफ एनी विद द कॉर्पोरेट डेटर, अदर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड बाय इट। भाई आपका रिलेशनशिप किस किस के साथ हो सकता है? सीडी के साथ हो सकता है, जो आपने अदर प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इंटरिम फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। ठीक है, और ये कब आपको बताना है? विद इन 3 डेज। जैसे अगर आपका सीडी के साथ कोई रिलेशनशिप है, तो आपको ये डिस्क्लोजर करना है विद इन 3 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और डिस्क ये जो रिलेशनशिप है उसका अलग मतलब है। ये रिलेशनशिप का क्या मतलब है वो भी पहले देख लेते हैं, है ना, तभी ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ये रिलेशनशिप का मतलब है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए, जिस एक एग्जांपल देता हूं, जिस कंपनी के आप आईआरपी आरपी अपॉइंट हो रहे हैं, उसमें उसमें आपके ब्रदर का शेयर होल्डिंग, आपका ब्रदर उस कंपनी का शेयर होल्डर है।
अब ये भी हो सकता है आपको पता ही ना चले, तो जब पता चलेगा उसके आपको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर बताना है, ठीक है, विद इन 3 days ऑफ योर कमिंग टू नो क्या क्या रिलेशनशिप है। जैसे वहां पर हमने आईआरपी में क्या पढ़ा था कि भाई अगर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं तो उसका 5% या 10% आपको उस सीडी से नहीं आना चाहिए। बट अगर आपको तो नहीं आ रहा, आपकी वाइफ को आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप ये पढ़नी है, अलग से है, इसका रिलेटेड पार्टी अलग चीज है, ये अलग चीज। वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में बी हैज derived 5% or more of his on its gross revenue in a year from professional services to the related party। और रिलेटेड पार्टी कौन है वो उसने पहले बता दिया, सीडी, इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वगैरह, ठीक है। Where the insolvency professional or the other professional, as the case may be, is a shareholder, director, key managerial personnel or partner of the related entity। ये तीसरा पॉइंट बड़ा खतरनाक है। क्या कहता है? वेर ए रिलेटिव, रिलेटिव में देखिए स्पाउस, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, सिबलिंग ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन of the insolvency professional or the other professional as the case may be has a relationship of kind A or B with the related party। मतलब एक इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर है, ठीक है। अब इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर और आपकी एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, आपकी नहीं मतलब इनमें से किसी की भी, स्पाउस, पेरेंट्स वगैरह वगैरह की, मान लीजिए आपके बेटे की कंपनी है, ठीक है, या आपके पेरेंट्स की कंपनी है या स्पाउस की कंपनी है, और उसको 5% मिल रहा है किससे? वो जो इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर है उसकी कंपनी से, तो भी रिलेशनशिप का आपको डिस्क्लोजर करना है। समझ में आ गई बात? ये है। मतलब नेक्स्ट लेवल है। वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में भी। अब मान लो आपको पता ही नहीं है, अब सिबलिंग की बात करता है, सिबलिंग क्या होता है? ब्रदर, है ना, भाई बहन होते हैं सिबलिंग। अब आपका भाई कौन सी कंपनी में किस कंपनी से क्या टर्नओवर ले रहा है आपको तो पता नहीं होगा, कई बार नहीं, जरूरी नहीं पता हो। तो ये कहता है जब आपको पता चले उसके 3 दिन के अंदर आपको डिस्क्लोज करना, पता ही नहीं तो बात अलग है। वेयर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और द अदर प्रोफेशनल एज द केस में भी इज ए पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, फर्म और एलएलपी सच as an insolvency professional entity or registered valuer, the relationship of kind A, B और C, ये ऊपर वाले तीनों, of every partner or director of such company, firm or LLP with the related party, ठीक है। मतलब आपके ब्रदर की कोई फर्म है, ठीक है, और वो ब्रदर की फर्म को आपको जो उसको 5% मिल रहा है किससे? उस सीडी से, उस इंटरिम फाइनेंस प्रोवाइडर से, उस प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से, तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विद इन 3 days किस किस के साथ रिलेशनशिप हो सकती है? कॉर्पोरेट डेटर के साथ, जस्ट, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अकाउंटेंट्स, लीगल, अदर प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल क्राइटर्स, interim finance providers, prospective resolution applicant। If relationship with any of the above comes to notice or arises subsequently, तो within 3 days of such notice or arise, ठीक है। अब इसमें 8C और 8D है। 8C में क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की रिलेशनशिप है। और 8D में क्या है? ये 8B में तो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की रिलेशनशिप, और 8C में क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की रिलेशनशिप है विद अदर प्रोफेशनल्स, ठीक है। और अदर प्रोफेशनल के साथ या तो इसकी रिलेशनशिप हो या अदर प्रोफेशनल्स की, किसके साथ? वो सीडी, फाइनेंशियल क्राइटर, फलाना फलाना, ये जितने भी हैं सारे। और टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप ये दे रखी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर,
प्रो आई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स वाला तो अलग से कर लेंगे, ये तो हमने कर ही दिया मोटा मोटा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का। ये एक इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये याद रखो, ऑथेंटिकेशन ऑफ डिफॉल्ट। आपने पढ़ा होगा कि भाई जब भी आपको एप्लीकेशन लगानी है उसके साथ में क्या लगाना है, डिफॉल्ट, है ना, इंफॉर्मेशन ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट या तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डिफॉल्ट। ऑथेंटिकेशन ऑफ डिफॉल्ट आपका क्या है, ये आप फॉर्म सी में एप्लीकेशन लगाओगे और ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगा फॉर्म डी के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, ये डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन देता कौन है, मान लीजिए बैंक, बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को बताएगा, ठीक है, कि भाई डिफॉल्ट हो गया। अब हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है आपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से लोन लिया हो, ठीक है। तो अगर जो जिससे आपने लोन लिया वो बैंक है, तो उस केस में बैंक ने क्या किया, बैंक ने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को बताया कि देखो भाई इस आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया। अब उस आदमी से पूछेंगे कि भैया ऐसा है, बैंक ने बताया है कि आपने डिफॉल्ट किया है, आप बता दो। अब आप क्या करोगे, या तो आप कंफर्म कर दोगे या फिर आप डिस्प्यूट कर दोगे कि भैया बैंक गलत बोल रहा है, मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है। अगर आप कंफर्म कर देते हो तो कलर ऑफ स्टेटस ग्रीन हो जाएगा, और अगर आप डिस्प्यूट कर देते हो तो कलर ऑफ स्टेटस रेड हो जाएगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते, आप बोलते ही नहीं, तो वो कहता है कि 3 रिमाइंडर्स के बाद में ये मान लिया जाएगा कि आपने लोन लिया हुआ है, आप जानबूझ के चुप बैठे अगर आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अगर आपने अदर देन बैंक से लोन लिया हुआ तो ये 3 स्टेटस हो गए, कलर ग्रीन, रेड या येलो। क्रेडिटर ने बताया कि आपने लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया, आपने कंफर्म, आपको ईमेल जाएगी, आप कंफर्म कर दोगे, कंफर्मेशन पर ग्रीन हो जाएगा। अगर आप डिस्प्यूट कर देते हो कि भाई वो गलत बता रहा है, मैंने तो कोई लोन लिया नहीं, तो रेड हो जाएगा। और अगर आप इफ यू डू नॉट रिस्पॉन्ड इवन आफ्टर 3 रिमाइंडर्स, तो फिर क्या होगा, ये डीम्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड और येलो हो जाएगा, इसमें येलो मार्क, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग होती है मार्किंग किस हिसाब से। अगर बैंक है जो कि सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ तो ग्रीन या रेड होगा, और अदर देन बैंक्स है तो फिर ग्रीन, रेड या येलो। And after recording the status of information of default, the information utility shall communicate the status of authentication in physical or electronic form. ठीक है, by issuing a record of default in form D. ठीक है, तो फॉर्म डी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इश्यू करती है किसको, हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ द डेटर, हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ अ डेट, एंड पार्टीज एंड श्योरिटीज इफ एनी टू द डेट एंड रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफॉल्ट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मोटा मोटा हमने काफी चीजें इसमें कवर कर ली पार्ट 4 से रिलेटेड। जो बाकी बचा है पार्ट 4 से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके जी, गुड नाइट। Thank Okay, you. Good thank night. you, sir. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू, sir. थैंक यू।